Okay, let us start the lecture. So today we will discuss integrable functions. Integrable functions. Integrable functions. So it's well known that the class of all upper functions is not a vector space because it's not closed with respect to the negative scalar multiplication. Okay, we know that the class of all upper functions is not closed with respect to scalar multiplication. Multiplication. So therefore not a vector space, therefore not a vector space. इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एफ होगी अपर फंक्शन बट माइनस एफ नीड नॉट बी एन अपर फंक्शन. अगर आप इसको देखना चाहोगे, ये इसमें एक्सरसाइज के फॉर्म में लिखा है इसको, and the exercise number is it's exercise 2. Okay, at page number 165. पेज नंबर 165 पर ये एक्सरसाइज है जहाँ पर इसने ये बताया कि एफ यू में है, एफ इज एन अपर फंक्शन बट माइनस एफ इज नॉट एन अपर फंक्शन. दिस इज माइनस एफ डज नॉट बिलोंग्स टू this set. Okay, see exercise 2 at page number 166. F is an upper function but minus f is not. So that means the class of upper functions is not closed with respect to scalar multiplication. Now we try to overcome this problem. We want to construct a space which is closed with respect to scalar multiplication, but that space we constructed that space with the help of these upper functions. Okay, so let's now we consider the class of all functions. हम ऐसी functions देंगे, class of all functions that can be expressed as and almost everywhere difference of two upper functions. Difference of two upper functions. Now we consider the class of all functions. Let's denote that class by say capital I. Okay, class of all. Now we consider the class of all functions capital I that can be expressed as an almost everywhere difference of upper functions. That's what is this I? It's this class. Set of all functions from x to r such that these functions can be expressed as u minus v, where these u and v, they are upper functions. So let's take this class. Then this class is closed with respect to scalar multiplication and it's a vector space. In fact, it is also a function space. Then I is closed with respect scalar multiplication.
multiplication, okay, scalar multiplication, and therefore a vector space. It's closed with respect to scalar multiplication, and therefore a vector space. In fact, this I is actually a function space. This I is a function space. Is a function space. ये हम सारी चीजें आगे देखेंगे. It's a function space. The members of I are called integrable function. इनके जो members है ना, the members of I, ये जो functions है, that can be expressed as the difference of almost everywhere. यहाँ पर 1 minute. It's f is equal to u minus v almost everywhere. Okay, f is equal to u minus v almost everywhere. Almost everywhere. So the members of I are called integrable functions. इनको हम कहते हैं integrable functions. अब हम नीचे इसकी definition ही देंगे अच्छी तरह से. Let's define this. A function f. A function f from x to r is called Lebesgue integrable. Is called Lebesgue integrable. Actually ये जो है ना, अगर इसका जो अपना approach actually integral function को define करेंगे, that's not this. This approach is given by Daniel. P.J. Daniel, okay, so this is not the actual approach, but we'll see that they are actually same. वो हम आगे देखेंगे. तो वहाँ पर जो एक्चुअल था इसमें जो इसका जो अपना जो तरीका है करने का, जो Lebesgue ने दिया है, दैट्स उसने पहले पॉजिटिव फंक्शंस को के लिए किया, पॉजिटिव इंटीग्रल फंक्शन, फिर उसने जनरल इंटीग्रल फंक्शंस को डिफाइन किया है. सो तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने अपर फंक्शंस को डिफाइन किया, इसके बाद हमने इंटीग्रेबल फंक्शंस को डिफाइन किया है. तो एक्चुअली वी विल सी दैट इफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड पॉजिटिव देन इट्स ऑलवेज एन अपर फंक्शन. तो ये वही पर आ जाएगा, तब जैसा Lebesgue ने दिया था वैसे यही ये आ जाएगा. ये टेक्निक जो डैनियल ने दी है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ Lebesgue, हाउ द डेफिनेशन ऑफ Lebesgue इंटीग्रेबल फंक्शंस, हम इनको कैसे डिफाइन करें. So they are different approaches, but they are actually same. They are actually same. The members of I are called integral function. A function f from x to r is called Lebesgue integrable. Is called Lebesgue integrable, or simply we can say integrable. Or simply integrable. Or simply integrable. If there exist two upper functions, if there exist two upper functions u and v such that f is equal to u minus v almost everywhere. That means if it is difference of two upper functions, इसको हम इंटीग्रल फंक्शन कहेंगे. This hold. अब इसके बाद हम इसका Lebesgue इंटीग्रल डिफाइन करेंगे. The Lebesgue integral, or simply the integral of f is डिफाइंड बाय. कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे. f इज इक्वल टू u माइनस वी. u भी अपर फंक्शन है, v भी अपर फंक्शन है. u का इंटीग्रल भी आपने डिफाइन किया, v का भी डिफाइन किया. तो अब आपको f का इंटीग्रल डिफाइन करना है, वेयर f इज इक्वल टू u माइनस वी. तो आप कोई है नेचुरल वे इसको डिफाइन करने का? कैन वी डू दैट? So we do it like this, we define it like this. Integral of f d mu is equal to integral of u d mu, ये actually well defined है, minus integral of v d mu.
both the things are well defined, so their difference is well defined, that means this integral of f is well defined. We define integral like this. मगर अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर f की एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी एज ए डिफरेंस ऑफ टू, सपोज f होगा u माइनस v के भी बराबर, u और v अपर फंक्शन, और इसकी और एक रिप्रेजेंटेशन होगी u1 माइनस v1 से, तो अब इस केस में तो इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ u माइनस इंटीग्रल ऑफ v, और इस केस में आ जाएगा इंटीग्रल f का इंटीग्रल ऑफ u1 माइनस इंटीग्रल ऑफ u1. तो अगर ये डिफरेंट होगी वैल्यूज, तब then this definition of integration, then this definition of integral of f is not well defined. तो वेल डिफाइंड तो तभी होगा ना जब इसका वैल्यू हमेशा यूनिक आ जाएगा. तो यूनिक के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि अगर हम दो रिप्रेजेंटेशंस लेंगे, द इंटीग्रल ऑफ एफ विल इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये हमें एक्चुअली इंश्योर करना है. सो इट शुड बी नोटेड दैट the integral f d mu is independent of its representation as a difference of two upper functions. So let's suppose it, let f is equal to u minus v, and this f is equal to u1 minus v1 almost everywhere. Okay, almost everywhere. Be two representations, be two representations of f as the difference of the two representations of f as the difference of two upper functions. Okay, so f is equal to u minus v almost everywhere, and f is equal to u1 minus v1 almost everywhere. So now this u minus v is equal to u1 minus v1 because both are equal to f almost everywhere. तो यहाँ अगर हम इंटीग्रल दोनों साइड से अप्लाई करेंगे फिर हम, बट आई कैन नॉट सेपरेट दोज इंटीग्रल बिकॉज माइनस वी इज नॉट एन अपर फंक्शन. v तो है अपर बट माइनस वी इज नॉट. हमने ये किया इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g. इस केस में दोनों अपर फंक्शंस थे. तो अगर मैं दोनों साइड से इंटीग्रल अप्लाई करूंगा तो फिर उस इंटीग्रल को मैं सेपरेट नहीं कर सकता. अगर सपोज ऐसा मैं कर सकता था देन तो फिर तो यहाँ से आ जाएगा दिस इंटीग्रल, देयर इंटीग्रल्स आर सेम, बट आई कैन नॉट डू दैट. तो मुझे एटलीस्ट ये जो माइनस साइन है ना इसको मुझे खत्म करना है. तो हाउ डू आई डू दैट? आई विल राइट दिस एज u प्लस v1 इज इक्वल टू u1 प्लस v. So this step is very important. मैं यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करूँगा. कर सकता हूँ मैं अप्लाई, I can do that, but not I can't do that because I don't have integral of u minus v actually, because u minus v is not an upper function. इसी तरह से u1 minus v1 is not an upper function in general, so I cannot apply integral here at least. No, but here u is an upper function, v1 is an upper function, sum of two upper functions is an upper function, u1 is an upper function, v is an upper function. Again the sum of two upper functions is again an upper function. So here I can apply the integral. Okay, and also I can separate this integral. As soon as everything is finite, so I can transfer the terms. So I write it as integral of u minus integral of v is equal to integral of u1 minus integral of u. So that means these two values are same. So hence integral of f is independent of its representation
of representation of f, you can write of representation of f, of representation of f as the difference of two increasing functions, of representation of f as a difference of two increasing functions, difference of two upper functions, two upper functions. So that integral that we have defined is now well defined, तो आपने इंटीग्रल फंक्शन को डिफाइन किया और इसका इंटीग्रल भी आपने डिफाइन किया है. अब आपके लिए एक एक्सरसाइज. Suppose that we have two integrable functions f and g and they are equal almost everywhere. They are not, one of the functions is integrable and second is the any function, but they are equal almost everywhere. Then you have to show that the second function is also Lebesgue integrable and their integrals are same. This is very simple. If f is an integrable function, and g is a function, g is any function, it is understood that f and g, their function is from x to r, okay, and g is any function such that f is equal to g almost everywhere. Then show that g is integrable, and integral of f is same as integral of g. अगर आप इसका solution देखना चाहोगे, so since f is an integrable function, so for this f we have upper functions. So let's take those functions, let u and v be upper functions, such that f is equal to u minus v almost everywhere. But f is the same as g almost everywhere. This means g is equal to u minus v almost everywhere. So therefore g can be expressed as the difference of two upper functions, which implies that g is integrable. And what's the integral of g? It is integrable. So integral of g किसके बराबर है? It's equal to integral of u minus integral of v. But integral of u minus integral of v is same as integral of f. It's equal to integral of f. Okay, so now next we have the following theorem. The collection of all Lebesgue integrable functions is a function space. The collection of all Lebesgue integrable functions is a function space. The collection of all Lebesgue integral functions is a function space. Okay. तो सबसे पहले आप चेक करोगे सम ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शंस इज इंटीग्रेबल फंक्शन. वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज तो इसके पास है ही. f प्लस g भी इंटीग्रेबल होगा, अल्फा f भी इंटीग्रेबल होगा, वेदर अल्फा इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज इंटीग्रेबल. सो इट्स अ वेक्टर स्पेस. तो फंक्शन स्पेस के लिए आपको चेक करना है कि f प्लस और जो f माइनस है ना, दे आर बोथ इंटीग्रेबल. अगर f इंटीग्रेबल है तो इसकी जो f प्लस है और f माइनस है, दे आर एक्चुअली इंटीग्रेबल. वो आपको चेक करना है.
Okay, so let's prove this theorem. Let f and g be two integrable functions. देखिए वेक्टर स्पेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मगर मैं सिर्फ प्रूव करूँगा इट्स क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इट्स क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना फंक्शंस के लिए वो ट्रिवियल है. सपोज एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फंक्शन यू हैव दैट्स कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1, वो हमेशा इंटीग्रेबल होती है. तो दैट्स आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी, बट इट्स आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको देखना है. दैट्स द जीरो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स. So that function is always integrable and that acts as an identity. So it's actually an abelian group with respect to addition because f plus g same as g plus f. As f and g they are real valued functions, आपको real numbers में इनकी equality देखनी है. तो rest of the properties जो है ना वो actually आप you are familiar with those properties जो vector space की बाकी. So सिर्फ आपको ये check करना whether this is closed with respect to addition or not and with respect to scalar multiplication. बाकी जो properties vector space की है वो आप इजीली चेक कर सकते हो. सो लेट्स टेक टू इंटीग्रल फंक्शंस एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर. सो वी शो दैट f plus g and alpha f are also integrable or also. पहले हम इसको चेक करेंगे. So let's take this. F is equal to u minus v and g is equal to u1 minus v1, where because f and g are integral functions, so that they can be expressed as difference of two upper functions. So where u, v, u1, v1 they all belong to u. They are upper functions. Now let's look at the sum. What's sum? Okay, we express sum as the difference of two upper functions that we have to see. It's equal to u minus v plus u1 minus v1, but that can be written as u plus u1. U is upper, u1 is upper, so their sum is upper. Okay, then minus times it is minus times minus v, so it's minus times v plus v1. U is upper, u1 is upper, so their sum is upper. V is upper, v1 is upper, their sum is upper. So that means f plus g can be expressed as difference of two upper functions. So where these u plus v and u1 plus v1 they belong to u, ये u में. So therefore f plus g is an upper. Therefore f plus g is integrable, is an integrable function. Therefore f plus g is an integrable function. Sorry, it's u plus u1, it's u plus u1 here, not u plus v. It's u plus u1. Okay, it's u plus u1, u plus u1. Okay, and then it's v plus v1. It's v plus v1 here. V plus v1. Okay, so therefore f plus g is an upper function. Now let's set alpha f. Alpha f is equal to alpha times u minus v. Okay, so this is equal to alpha u minus alpha v. So alpha u is not an upper function in general because alpha may be positive or negative. If it's negative, it is not upper. Alpha v is not upper, so it's not the difference of two upper functions, but we have to express it as a difference of two upper functions. Okay, so let's take two cases. If alpha greater or equal to 0, then alpha f is equal to alpha u alpha v, then both are upper functions because u is upper, scale positive scalar multiple of upper function is upper. So where
where in this case both alpha u and alpha v belongs to u. So therefore alpha f is upper, alpha f is integrable. सेकंड केस इफ अल्फा इज नेगेटिव, अगर अल्फा नेगेटिव होगा उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा यू माइनस अल्फा वी. आई कैन राइट इट एज I have to express it as alpha is negative. Okay, I can write it minus alpha times v. This is positive, minus alpha is positive. Okay, then I can write it as like this, minus times minus alpha u. So here you can see that this minus alpha v, it is a positive scalar multiple of v, where v is an upper function, and minus alpha times u, it's again a positive scalar multiple of u. So both minus alpha v and minus alpha u, they are upper functions. So where this minus alpha v and minus alpha u, they are what? They are upper functions. Okay, so therefore alpha f is integrable, and hence the class of all integrable functions is a vector space. So therefore alpha f is integrable, is thus the class of all integrable functions, class of all integrable functions is a vector space, Now for function space we must see whether this f plus and f minus are integrable or not. Okay. So we know that f is equal to f plus minus f minus, है ना, ये हम जानते हैं. आपको चेक करना है f प्लस इंटीग्रेबल है या नहीं है. तो अभी तक आपने क्या किया चेक? अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, उनका सम भी इंटीग्रेबल है, obviously इनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होगा because it is closed with respect to any scalar multiplication. So whenever f is integrable, g is integrable, then their difference must be integrable also. Or because the class of integrable functions is closed with respect to any scalar multiplication. Okay, so you have seen that if f is integrable, g is integrable, then their sum. So since f is integrable, g is integrable, so minus g is also integrable. Now their sum is also integrable. It's f plus minus g, that's f minus g. So that's what I'm trying to see. So if f and g are integrable, then their difference is also integrable because it's closed with respect to any scalar multiplication, whether positive or negative. So here we have to see whether this f plus is integrable or not and f minus. अगर मैं सिर्फ एक चेक करूँ f प्लस इंटीग्रेबल है, f तो है ही इंटीग्रेबल, f प्लस भी अगर मैं प्रूव करूँ ये इंटीग्रेबल है, तो आप इजीली बता सकते हो कि f माइनस भी इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि f माइनस आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो. f माइनस किसके बराबर आ जाएगा? f प्लस माइनस f. और आपने ऑलरेडी वेरीफाई किया है कि f प्लस भी इंटीग्रेबल है, f है ही इंटीग्रेबल, सो इनका डिफरेंस इंटीग्रेबल है. तो दो फंक्शन में सिर्फ आपको एक ही फंक्शन चेक करनी है, f प्लस और f माइनस. So what's f plus? What's f plus? What's f plus? Now let's try to find this f plus. What's f plus? F plus means by definition, it is the maximum of f and 0. Okay, so that's the maximum of what's f? F is u minus v and 0. It's the difference of two upper functions, and this maximum is equal to u join v. Okay, u join v minus v. So let's write this v like this. Okay, let's change this v. Okay, v. Okay, v.
So it's u join v minus v, maximum of u minus v, and 0 it's actually this. What's maximum of f and g? That's a mod of f minus g, then the difference. Okay, you can verify this. It's very simple. Actually आपको निकालना है क्या, आपको एक्चुअली मैक्सिमम चाहिए इसका. ये डिपेंड करता है u माइनस वी पर. अगर u माइनस वी पॉजिटिव होगा उस केस में u माइनस वी ही मैक्सिमम होगा. अगर u माइनस वी नेगेटिव होगा उस केस में 0 मैक्सिमम. सो दिस u माइनस वी कब पॉजिटिव होगा, मैं यहाँ पर, आप इसको फिर अच्छी तरह से लिखना, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ. इफ u माइनस वी ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर ये 0 ग्रेटर इक्वल, दैट मीन्स u इज ग्रेटर इक्वल टू v. उस केस में क्या होगा, देन व्हाट विल बी f प्लस. अब चूंकि u माइनस वी पॉजिटिव है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो आपको मैक्सिमम चाहिए u माइनस वी और 0 का. उस केस में ये जो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम का, दैट्स u माइनस वी. अब आपको ये चेक करना क्या ये इसके बराबर है, एंड u ज्वाइन v माइनस वी, ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट्स u ज्वाइन v. u ज्वाइन v मीन्स द मैक्सिमम ऑफ u एंड v. व्हाट्स मैक्सिमम ऑफ u एंड v? What's this? It's u, because u is greater or equal to v. So it's u minus v. यही आ गया ना जो ऊपर आपके पास आ गया, f प्लस भी आ गया u माइनस v, और ये जो आपने लिखा u ज्वाइन v माइनस v, ये भी u माइनस v आ गया. So that means f प्लस इज इक्वल टू दिस u ज्वाइन v माइनस v. इसी तरह से आप देख सकते हो u अगर लेसर इक्वल टू v होगा उस केस में जो मैक्सिमम होगा वो 0 होगा, और आपको चेक करना u ज्वाइन v माइनस v, ये भी 0 आ जाएगा. उस केस में एक्चुअली क्या होगा, उस केस में आपके पास ये आ जाएगा u ज्वाइन v के बराबर आ जाएगा, ये v के बराबर आ जाएगा. इट विल बी v माइनस v, दैट्स इक्वल टू 0. सो यू कैन इजीली सी दिस, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. यू हैव टू वेरीफाई दिस मैक्सिमम ऑफ u माइनस v 0 इज इक्वल टू u ज्वाइन v माइनस v. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. This is very simple. And you know that whenever we have upper function is u and v, then their join is also an upper function. Okay. But the problem is with minus v. What about minus v then? आपको चेक करना है कि f प्लस आना चाहिए अपर फंक्शन, दिस इंटीग्रेबल फंक्शन. ओके, आपको अपर फंक्शन है, आपको इंटीग्रेबल फंक्शन, तो हमारा ये तो आ गया, बिकॉज दिस u ज्वाइन v is an upper function, v is an upper function, so thus f plus can be expressed as the difference of two upper functions, so thus f plus can be expressed as the difference of two upper functions. Therefore f plus is integrable. And finally we see this. Finally f minus किसके बराबर आ जाएगा, f minus को आप it's equal to f plus minus f is integrable, because f plus is integrable, f is integrable, the difference of two integrable functions is again an integrable function. So f plus and f minus both are integrable. So hence the class of all integrable functions is a function space. Hence the class of all integrable functions is a function space.
is a function space. Okay. Okay, exercise. If f is integrable, अगर f integrable होगी, then show that mod f is also integrable. Mod f is also integrable. Solution. We have f is equal to f plus minus f minus, and mod of f is equal to f plus f minus. By previous theorem, f is integrable. Okay, by previous theorem, f plus and f minus are integrable. So therefore mod of f is integrable because it is sum of these two functions. Therefore mod of f is integrable. Mod of f is integrable. Okay. So one more exercise, f is integrable if and only if f plus and f minus are both integrable. Okay, that's the next exercise. Show that f is integrable if and only if both f plus and f minus are integrable. अगर ये दोनों integrable. Solution. So let f be integral function, let f be integrable. f integrable by previous theorem, by जो आपने भी theorem में prove किया, by previous theorem f plus and f minus are integrable. So whenever f is integrable, then both are integrable. So conversely, assume that f plus and f minus are integrable, are integrable. आपको प्रूव करना है f. Then this f is always equal to f plus minus f minus is integrable because it is now difference of two integrable functions. Is integrable. Is integrable. Okay, this function is integrable whenever f plus and f minus are integrable functions. So next we will see that the integral of linear combination of two functions is the linear combination of the integrals. That's this theorem, linear property of integrable functions actually. If f and g are integrable functions, if f and g are integrable functions and alpha beta they are real numbers, then integral of alpha f plus beta g is equal to alpha times integral of f plus beta times integral of g. Okay, proof इसका.
So assume f and g, it is given that f and g are integral functions. So let's write this as f is equal to say u1 minus v1 and g is equal to u2 minus v2, where they are all upper functions, where u1 v1 u2 v2 belongs to u. Okay. So then we know that class of all upper function, class of all integrable functions is a vector space. So this alpha f. Now then alpha f plus beta g is an integrable function. ये तो integral function होगी ही because class of integrable functions is a vector space, is integral, or integral functions is an integral function. Now let's try to find its integral. So since f is difference of two upper functions, so also we have integral of f is equal to integral of u1 minus integral of v1, and integral of g is equal to integral of u2 minus integral of v2. ये आपके इसका नाम आप वहाँ रख दीजिए, ये आपके पास है. So again actually it depends on whether these alpha beta are positive or negative. So first case हम लेंगे case 1, हम लेंगे case 1, alpha and beta are non-negative. Suppose they are not negative, they are greater or equal to 0. Then alpha f प्लस बीटा जी, ये किसके बराबर? फर्स्ट क्योंकि मैं कभी इसका इंटीग्रल निकाल सकता हूँ, ये तो इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रल डिफाइन है, बट क्या है उसके लिए मुझे पहले इसको एक्सप्रेस करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू अपर फंक्शंस. दिस इज अल्फा टाइम्स u1 माइनस v1 प्लस बीटा टाइम्स u2 माइनस v2. एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो यू डोंट नीड टू राइट हियर. अगर आप इसको लिखना भी चाहोगे इट इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यहाँ पर भी है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, it's almost everywhere. Okay. And this is alpha and beta, they are non-negative, so it's alpha u1 plus beta u2. This is an upper function because alpha and beta are positive, it is sum of two upper functions, minus times alpha v1 plus beta v2. Again it's an upper function, so therefore the integral is integral of alpha f plus beta g is equal to integral of this part alpha u1 plus beta u2 minus integral of alpha v1 plus beta v2. और अपर फंक्शंस के लिए आपने देखा कि पॉजिटिव स्केलर्स को बाहर निकाल सकते हैं. इट्स अल्फा टाइम्स इंटीग्रल u1 एंड दिस इज अल्फा टाइम्स इंटीग्रल v1. अल्फा बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल v1 plus beta times integral u2. Okay, I can separate this integral because both are upper functions, that I can do, and minus integral v2. This is equal to alpha times integral of f plus beta times integral of g. सेकंड केस में देखो बोथ आर पॉजिटिव, और फिर थर्ड केस आप खुद देख लेना, अगर एक पॉजिटिव होगा एंड सेकंड इज नेगेटिव. ओके, दिस इज केस नंबर 1. केस 2, if alpha positive, सॉरी नेगेटिव, ओके पॉजिटिव के लिए हमने चेक किया, अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव. उस केस में माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा क्या हो गया, दे आर ग्रेटर देन 0. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस. अल्फा एफ प्लस बीटा जी, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स u1 माइनस v1 प्लस बीटा टाइम्स u2 माइनस v2. सो
this is minus alpha v1 minus beta v2, then so let's write it as I want to express it as a difference of two upper functions, actually upper functions. So how do we do that? So first I will write it as minus alpha v1 and minus times minus alpha u1, okay, then minus beta v2 and minus times minus beta v2. Now they are all positive, multiples are all positive, okay, they are all positive numbers. So it means that they are all now they are not all upper functions. So I should write it as minus alpha v1 minus times minus alpha u1, okay. So then I want to express it as the sum of difference of two upper functions, actually. So do it. It's here minus, okay. It's here minus. So I will write it as let's sit here. I will write it as minus alpha v1, which is upper function, and then plus times minus beta v2, okay, minus beta v2. So this is an upper function because scalars are non-negative. Then it will be minus times, okay, minus alpha u1, here it's plus minus beta v2, this you can see. So the scalars are positive everywhere, so that means they are upper functions, they are upper functions. So this implies that integral of f plus beta g is equal to integral of this part minus alpha v1 plus minus beta v2 and minus integral of minus alpha u1 and then plus minus बीटा v2. तो इसके बाद आपको मतलब आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो अल्फा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ दैट यू कैन डू. पहले आप ये सेपरेट कर सकते हो because it is the sum of two upper functions. So let's do this first. This is equal to integral of minus alpha v1, okay, minus alpha v1, then plus minus beta v2 plus integral of minus beta v2, okay. Okay, so now next it's यहाँ पर भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. माइनस टाइम इज इट इज इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं. माइनस अल्फा u1 माइनस टाइम्स इंटीग्रल माइनस अल्फा u1, okay, then it will be minus integral minus beta v2 minus minus integral minus beta v2. ओके, अब स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं. स्केलर बिकॉज इट्स अ नॉन नेगेटिव स्केलर, इट्स माइनस अल्फा टाइम्स इंटीग्रल v1 देन प्लस माइनस बीटा टाइम्स इंटीग्रल v2. इस माइनस को निकाल सकते हैं बाहर, इट विल बी प्लस अल्फा टाइम्स, ओके, बिकॉज माइनस अल्फा इज पॉजिटिव, इंटीग्रल u1 देन इट विल बी प्लस बीटा टाइम्स इंटीग्रल v2. Now you can see this, it's
alpha times integral u1 minus integral v1 plus beta times इंटीग्रल सॉरी यहाँ पर इट्स प्लस बीटा टाइम्स इंटीग्रल v2 minus should be it's here u1 minus v1. Okay, it's fine, but I think one of them is u2 actually. Yeah, so which one is u2? That I have to see. It's v2, beta v2. Okay, where is u2? Beta u2. Okay, beta u2 minus beta u2 minus alpha, then this फिर आपने लिखा माइनस बीटा तो माइनस टर्म्स इट्स हियर u2. ओके, माइनस बीटा के साथ u2 है, माइनस बीटा के साथ u2 है. ओके, माइनस बीटा इट्स हियर u2. so it's u2, it's u2 u2. ओके, माइनस बीटा के साथ u2 है. नेक्स्ट माइनस बीटा जो आप यहाँ लिख रहे हो ना, माइनस बीटा, ये एक माइनस जो है ना बीटा, एक जो बीटा आपके पास है माइनस बीटा, इसके साथ u2 है, इसके साथ आपका ये u2 है. ओके, so लेट्स आपने इसको प्लस किया है कि it is your u2, this one, it's u2 here and it's here, it's u2. so beta times integral u2 minus integral v2. so this one is called alpha times integral of f plus beta times integral of g. इसी तरह से केस थर्ड आप देख सकते हैं, if one of them is positive and there is negative. so that's case third. Okay, that you can see, it's if alpha less or equal to 0 and beta greater or equal to 0. and case fourth, that is similar to this, if alpha greater or equal to 0, beta less or equal to 0. तो ये दो केसेस आप देख लेना इसकी, इस तरह के. So now in the next theorem we will see that every non-negative integrable function is actually an upper function. It's an upper function. तो upper function के लिए obviously आपके पास generating sequence चाहिए ना, generating sequence. You must have a generating sequence for upper function. So that's the next theorem. If an upper function f satisfies, if an upper function f satisfies f greater or equal to 0 almost everywhere, then f is an upper function. If an integrable function, not an upper function. Okay. So if an integrable function f satisfies f greater or equal to 0, then f is an upper function. Then f is an upper function. Then f is an upper function. Okay, proof. So since our function f is upper function, so we can choose to integral function, so we can choose upper functions. So let u and v be upper functions. Let u and v be upper functions. Such that f is equal to u minus v almost everywhere.
So since u and v are upper functions, so they are the limit of the sequence of step functions. So we can find the sequence of step functions such that that sequences they converge to u and v respectively. So let's take this sequence. Let's use the notation. Let phi n and phi n dash. Okay, let phi n and phi n dash be sequences of step function such that phi n increases to u almost everywhere and phi n dash it increases to v almost everywhere. So this implies phi n minus phi n dash, this the limit of this, it may not increase because you are taking the difference, its limit is u minus v almost everywhere. So that means let's write this difference as psi n. It's again a step function. The limit is u minus v, limit with respect to n, okay, almost everywhere. So where psi n, what psi n is equal to phi n minus phi n dash is a step function, is a step function for all n greater or equal to 1. So thus we have a sequence of step functions psi n such that the limit of psi n is u minus v. So and that u minus v is equal to this is equal to f almost everywhere. So limit is f almost everywhere. So therefore there is a sequence of step functions psi n such that therefore there is a sequence psi n of step functions. It's not increasing sequence, okay, of psi n step functions such that limit of psi n is equal to f almost everywhere. अगर ये psi n increasing होती है ना तो तब जाके एक कंडीशन आपके पास f की आपको प्रूव करना है f अपर फंक्शन f की जनरेटिंग सीक्वेंस है, तो तब जाके आप इसी को चेक करते हो कि ये जनरेटिंग सीक्वेंस है या नहीं, अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है. बट इट्स नॉट इंक्रीजिंग, इट्स अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच मे नॉट बी इंक्रीजिंग. तो इस साइन से एक्चुअली आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है किसी तरह से. So since f is measurable, f is an integral function, therefore it's measurable. It's the difference of two upper functions, and upper functions are always measurable. So and difference of two measurable functions is measurable. So since f is measurable, and f greater or equal to 0, तो आपने इसके लिए एक रिजल्ट किया है. फॉर अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन देयर एक्सिस्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल फंक्शंस. सो देन बाय थ्योरम, मैं अब यहाँ पर नंबर ही मेंशन करता हूँ, बाय थ्योरम जो आपने किया है 17.7, देयर एक्सिस्ट्स अ सीक्वेंस, देयर exists a sequence Sn of simple functions satisfying 0 less or equal to Sn, and Sn increases to f almost everywhere. अब इस Sn और psi n से आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस f के लिए निकालोगे जो कि स्टेप फंक्शंस होगी, क्योंकि ओके ये psi n जो है ना ये थी स्टेप फंक्शन, बट दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, और ये जो Sn है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बट इट्स नॉट अ स्टेप फंक्शन. तो प्रॉब्लम दोनों में है. तो आप दोनों को मिलाकर हम एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे जो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, इंक्रीजिंग भी हो और लिमिट उसका f आ जाए. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. So
So let's define now for each n define now for each n greater or equal to 1. Let's define this. Define phi n is equal to Sn meet, then here it's join I runs from 1 to n, psi I plus, okay, psi I plus, where what is this what psi I plus, where this psi n plus it increases to f plus, and f plus is same as f almost everywhere because f is non-negative function, so sin तो ऊपर आपने लिया है ना, sin increases to f, so sin plus increases to f plus, not increases, okay, it's not increasing limit, sorry, increasing limit नहीं है, it approaches to f plus, that's equal to f almost everywhere, and that's equal to f almost everywhere. Then this file, because it's जो आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर यहाँ से आपके पास सिंपल फंक्शन ही होगी और यहाँ से इसके मीट के साथ आपके पास स्टेप फंक्शन होगी, then this meet it's a step function, so therefore this phi n is a sequence of step function, therefore phi n is a sequence of step function, it's a sequence of step, and it's increasing, that you can easily verify that fn it's phi n, okay, it's your phi n, and this phi n, it's less or equal to phi n plus 1, okay, it's an increasing sequence, so it's also greater or equal to 0, it's so also you can see this phi n, it increases to f, that you can verify, इसको आप वेरीफाई करिए, इसका लिमिट f के बराबर है, तो f के लिए आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई है, f के लिए आपके पास, इन दैट यू कैन इजीली वेरीफाई दैट द लिमिट ऑफ phi n इज एक्चुअली f, क्योंकि Sn का लिमिट भी f है और psi I प्लस का लिमिट भी f है, तब आप इसका लिमिट लोगे ना phi n का, इट्स द लिमिट ऑफ दिस मीट लिमिट ऑफ दिस, दोनों का लिमिट f है, तो इट्स f मीट f, दैट्स इक्वल टू f, सो दैट्स वेरी सिंपल, दैट यू कैन डू, इट्स लिमिट इज f, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लिमिट f है, अब आपको सिर्फ चेक करना है लिमिट ऑफ द इंटीग्रल ऑफ phi n इज फाइनाइट, लिमिट ऑफ द इंटीग्रल ऑफ phi n इज फाइनाइट, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस, नाउ this phi n, it's less or equal to f almost everywhere, because phi n increases to f, this means that phi n is less or equal to u minus v almost everywhere for all n, because f is u minus v, which means that phi n plus v is less or equal to u almost everywhere for all n greater or equal to 1. Now look at this, phi n is step function, v is step function, u is step function, therefore all are upper function, so we can apply, and it says sum, so we can apply the integral here, and we can also separate the integral, so integral of phi n plus integral of v is less or equal to integral of u, so this means that integral of phi n is less or equal to integral of u minus integral of v, and this thing is finite, so let's apply the limit, अगर मैं इसमें limit apply, it's always less or equal to this, so that means limit of integral of phi n is less or equal to integral of u minus integral of v, which is the finite thing. So this phi n satisfies both the properties for being the generating sequence for f, because its limit is f and the limit of integral of phi n is finite. So therefore phi n is a generating sequence for f, and hence f is an upper function. Therefore this phi n
sequence is a generating sequence, is a generating sequence for f, and hence f is an upper function. F is an upper function. F upper function. So that's the end of this theorem. अब इसके बाद एक note आप लिख दीजिए, that then we will conclude this lecture. Since f plus is greater or equal to 0, f minus is greater or equal to 0, and whenever f is integrable, and whenever f is integrable, then both f plus and f minus, then both f plus and f minus are integrable, and they are also non-negative, but non-negative integrable functions are upper functions, therefore upper functions, therefore upper functions by previous theorem, therefore upper functions by previous theorem. So whenever f is an integrable function, then both f plus and f minus are upper functions. They are upper functions. They are upper functions. Also, your f is equal to f plus minus f minus. So whenever f is integrable function, then f is equal to f plus and f minus, and this is the standard representation of integrable function as a difference of two upper functions. So therefore when f is integrable, then when f is integrable, then this f equal to f plus minus f minus, then this f equal to f plus minus f minus is the standard representation, is the standard representation of f as the difference of two increasing functions, as the difference of two upper functions, as the difference of two upper functions. तो मैंने पहले भी बताया कि difference of two upper functions, you can express it any number of ways, but this way is the standard representation, क्योंकि f plus और f minus आप f से ही consider करते हो. Also in this case, this integral f is equal to integral f plus minus integral f minus. That's it. और कुछ बुक्स एक्चुअली वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो पहले पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल डिफाइन करते हैं, फिर वो जनरल फंक्शन का इंटीग्रल ऐसे ही डिफाइन करते हैं. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर.